हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज यू हैव आस्क्ड अस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन व्हाई डू वी प्रेफर रोड ट्रिप्स एंड हेंस वी थॉट लेट्स मेक अ वीडियो फॉर यू। तो ये है एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए। हम लोग आज एक छोटा सा रोड ट्रिप पे ही जाएंगे, पर जाते जाते आपको बताएंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ रोड ट्रिप and what are the road trip essentials. So keep watching for the tips. So it is another weekend. सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े। न्यू टाउन को पार करते हुए वी हेडेड टूवर्ड्स दक्षिणेश्वर। इरादा है हुगली रिवर को पार करके वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स बर्धमान। Destination yet undecided. Secret start in your heart to slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. अगर आप 3 लेन हाईवे पे चल रहे हो, मतलब 6 लेन हाईवे 3 लेन वन साइडेड कैरेज वे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप सेंटर लाइन से ड्राइव कर रहे हो। अगर आप 100 के स्पीड के आसपास चला रहे हो, अगर आप स्लो चलाते हो बिलो 60, देन यू कैन टेक द लेफ्ट लेन। बट राइट लेन ना ऑलवेज खाली रखना चाहिए, दैट इज फॉर ओवरटेकिंग. So any car which wants to overtake you can have that as a free access to do so. So if you are driving at 100, drive at the center lane. But India में आपको दिखेंगे कि trucks आपको always right lanes में मिलेंगे. There is no justification, no explanation as to why on a 3-lane carriageway you have to be on the right lane. But अगर आपको दिख जाए, you can still continue to carry on the center lane. So you will see that I'll be passing all these trucks who are probably going at 50 or 60 kmph on the 3rd lane. I'll have to overtake from the left lane, which is not to be done, but I don't have any other option to do that. अभी most 3 lane highways पे आपको 100 का speed limit मिल जाएगा. So I usually continue at 100 kmph. It's only like if there are certain highways where they have a 120 kmph speed limit, that I take it to 120. But I would recommend that you go between 80 to 100 when you are going on road trips. That's the ideal zone to get maximum mileage as well. And you will also be in full control of your car whenever if there is an emergency that you can take a corrective action. जितना आप ऊपर जाएंगे आपका रिएक्शन टाइम कम होता जाएगा, एंड ऑल्सो यू विल रिक्वायर अ लॉट मोर ब्रेकिंग डिस्टेंस टू स्टॉप, विच यू नो आप कहोगे कि ऑटोबान में तो लोग 290 300 kmph में चलाते हैं, बट वहाँ पे एवरीथिंग इज इन सिस्टम. यू विल नॉट हैव स्ट्रे एनिमल्स वॉकिंग अक्रॉस, और यू विल नॉट हैव ट्रक्स दैट आर गोइंग एट 50 kmph इन द सेंटर ऑफ द हाईवे. सो those things you will have to take into account. Recently आपने देखा होगा कि गुड़गांव में एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे एक रोल्स रॉयस which was going on the 3rd lane hit a truck which was going on the 1st lane and tried to take a U-turn, right? So the truck driver never expected that the Rolls Royce would be at 200 kmph, and that is why probably that the truck driver kind of misjudged that, took the U-turn, and this Rolls Royce went and rammed into the car. अभी आप देख सकते हो, I have taken the rightmost lane because I know there is merging traffic. That is why I am going on the rightmost lane. But every time otherwise, I will go on the center lane. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart.
अभी आप देख सकते हो कि वी आर ऑन अ 4-lane हाईवे which means a dual carriageway on one side and you will see trucks on both the lanes driving at 50 km/h. तो आप तो ऐसे अगर जाओगे at 50 km/h आपको पहुंचने में डेस्टिनेशन में एटलीस्ट 1.5 times लगेगा which you may or may not have in your hand. So you will have to develop an art of dodging through traffic, and that you will have to do effectively by gauging the speed of the two cars. जैसे कि आप देख सकते हो एकदम सामने there are two trucks on two separate lanes going at the same speed. तो यहाँ पे मैं ना स्लो डाउन कर दूंगा. I will not go at full speed and then brake at the end. I will slow down, give those two vehicles to space out in between, and then when I reach and overtake the first one, I am able to dodge and squeeze through. आप आगे की दो गाड़ियाँ देख सकते थे. They had been behind those trucks for a long duration, which required them to slow down, and only again when they got the space that they picked up speed. So इसमें क्या होता है कि आपको ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है. एट द सेम टाइम आपको फिर से एक्सलेट करोगे तो आपका स्पीड यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, एज इन द फ्यूल यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा. गेन दैट स्पीड. नाउ आई एम नेवर क्रॉसिंग 100 km/h. आप देख सकते हो गाड़ियाँ ओवरटेक करके जाएंगे, बट आई विल मेंटेन 100 km/h बिकॉज इफ आई बी इन दिस जोन फ्रॉम 80 to 100, आई नो आई कैन स्लो डाउन फ्रॉम बिफोर, लीव माई फुट ऑफ द एक्सीलरेटर, गिव दीज टू trucks adequate space, and then when I get space I will be squeezing through. इससे क्या होता है कि I am saving fuel which I will not unnecessarily use in braking and accelerating. जैसे कि अभी आप लोग ने देखा कि there was a under construction section, तो ये it's pretty common in Indian highways now. There will be a lot of sections where there are road construction works going on because बहुत सारे ऐसे dual carriageway, triple carriageway में converted हो रहे हैं. तो you will have to keep a watch out. At least look beyond the cars in front of you a kilometer ahead so that you are able to take better decisions when you are arriving at such position. You have to slow down well in advance because those sudden left turns होते हैं, sudden right turns होते हैं. एंड ये आप अगर गूगल मैप यूज़ कर रहे हो तो गूगल मैप आपके डिस्प्ले स्क्रीन में दिखा देगा एज येलो जोन्स. सो वेरेवर देयर इज एन येलो जोन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेन बीइंग एट वर्क. हाँ, ऐसे भी होता है कि अगर ढाबे बहुत सारे होते हैं तो वो भी येलो जोन दिखाते हैं, बट इट्स बेटर टू स्लो डाउन इन एडवांस एंड देन गेज द सिचुएशन एंड देन गो एज रिकमेंडेड. ऑल्सो आपको बहुत सारे रोड साइंस दिख जाएंगे जैसे डाइवर्शन बोर्ड्स, men at work boards, so keep a watch out for those. वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा जज करने के लिए कि आगे क्या है, and you will be able to take better decisions because of that. Okay, before going on a road trip, अगर आप उतने रेगुलर नहीं हो रोड ट्रिप, then it is recommended that you take your car for servicing before going on those large trips. But अगर आप road trips करते हो and you travel 500 kilometers once a month or something like that, then it is not necessary for you to go and service your vehicle before the road trip. If you are maintaining your intervals that is recommended by your company and getting your car serviced, then you are good. But if you are proceeding on a 1000-2000 kilometer trip, few things to get it checked, it's better you go for a checkup at least if you are not going for a servicing. क्या क्या ठीक होने हैं आपकी गाड़ी में? Your wheel alignment balancing is very much required. If your car is not balanced, okay, the wheels are not aligned, then one wheel might bounce around a lot more than the other. Now, if you are going on short duration like a 20-30 kilometer trip within city, उसमें कुछ नहीं होगा. But अगर आप long distance के लिए जा रहे हो, then so many times the car wheel jumping, in an improper manner might cause defects and issues with the wheel as such. So it is always good to get your alignment balancing done. Then the other thing that you need to check is your coolant, if it is adequate amount, and your other fluids, which is your brake fluids, gear lever fluids, etc.
windshield wiper fluid is also an important thing, so tank it up. साथ में मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलवेज एक 1 लीटर मिनरल वाटर बॉटल कैरी करता हूँ, जो कि मैं एवरी टाइम अपने होटल से रिफिल कर लेता हूँ. कई बार आपको यू डोंट रिक्वायर दैट वॉशर फ्लूइड. व्हेनेवर यू रीच अ डेस्टिनेशन, बिफोर पार्किंग एंड गोइंग टू योर रूम, जस्ट pour that water bottle onto your windscreen, give it a good wipe, and then you can go back to your room. So whenever you come the next morning, your windscreen is clean, windscreen is also dry, so there is no chance of other things to accumulate onto your windscreen. So that is another thing that needs to be checked. इसके अलावा, you know, more or less you don't need any other thing significantly for a road trip. बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे. Those are all good to have. Like they will tell you that you need to have a tow hook, tow line rather. You need to have certain instruments, like you need to get certain wrenches, screwdrivers of different sizes. Then you need to get extra bulbs for your headlights, or extra bulbs for your fog lights, or they will ask you to carry a lot of relays, etc. See, those are good to have. If you are getting your car serviced on a regular interval, तो आपको वो चाहिए नहीं होगा, because all those checks are done whenever your car goes to the service center. हाँ, ये कर लीजिए कि इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड इसके लिए ना थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए आपके रूट में, whenever you are going, that आपके entire जर्नी रूट में आपके कंपनी के सर्विस सेंटर्स कहाँ हैं. Now सर्विस सेंटर्स, if you are having a Maruti Suzuki, or if you are having Mahindra or Tata or any other Indian brand, even Hyundai, उसके सर्विस सेंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो you are at an advantage. If you are having some foreign brands, उनके सर्विस सेंटर उतने नहीं होंगे, but at least at 200, 300, 400 किलोमीटर इंटरवल्स आपको मिल जाएंगे. तो वो चीज़ आप थोड़ा आपके पास इंफॉर्मेशन लेके रखिए. या अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज दैट योर windscreen wipers, have a check on those wipers before you are going on a road trip, because ability to clear the windscreen for you is very much important. अगर आपके पास rear wiper भी है तो वो भी चेक करा लीजिए. ज़्यादा महंगे नहीं होता है. इफ़ पॉसिबल गेट देम रिप्लेस्ड. When you are driving in range, ठीक है, अगर आपके गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है तो प्लीज़ अपने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर लीजिए. दैट विल हेल्प अ लॉट इन केस यू आर कमिंग ऑन अ puddle where there is sufficient amount of water volume between the road surface and your car. So जैसे कि है, मैं TCS ऑफ करके चला रहा था, अब मैं TCS ऑन कर दिया, मेरे ट्रैक्शन कंट्रोल्स अभी ऑन हो गए. We are driving through torrential monsoon rain. ठीक है, आप देख सकते हो मेरे सामने 2 गाड़ियाँ अपने hazard lights on करके जा रहे हैं. Now this is a regular thing you will see across India. Should you do it? Should you not do it? Now I'll tell you advantages of both. First thing, like if you switch it on and go, it is fine, you are more visible to the others. But that is the only advantage of switching it on and going. Disadvantages, first and the most important, ये आपको तभी यूज करना चाहिए जब आप स्टेशनरी हो, on a highway or anywhere in the dark. Now if it is too much foggy and too much rainy, what will happen is somebody who is genuinely stopped at a place with his or her hazards on, somebody will else mistake that person as a moving vehicle, and in the effort to follow that person might go up and hit that person. So ये बहुत ही एक dangerous practice है on Indian roads. ये जला के जा रहे हैं, which will give me a sense that he is actually going, which will give me a sense that somebody who is stopped is
also moving and I might go and hit that person. तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको बस अपने हेडलाइट्स को, जो गाइडिंग लाइट्स है, उनको ऑन कर दीजिए. उनको ऑन करते ही आपके टेल लाइट्स ऑन हो जाएंगे. जैसे ही आपके हेडलाइट्स और गाइडिंग लाइट्स और टेल लाइट्स ऑन हो जाते हैं, तो एनी कार कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, वो आपके पीछे से आ रहे हो, सामने से नहीं आ रहे हैं. सो देर इज़ अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू व्हीकल्स. यू आर इजीली डिटेक्टेबल बाय एनी व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. सो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने हज़ार्ड्स ऑन करके चलाएं. सेकेंड डिसएडवांटेज इज लाइक इफ यू हैव योर हज़ार्ड्स ऑन और आप लेफ्ट या राइट मूव करने के लिए आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, तो आपके इंडिकेटर्स नहीं चलेंगे आपके हैज़र्ड्स ऑन होने के कारण. सो व्हाट विल हैपन इज दैट you will only get to have your hazard staying on. Nobody is going to understand. You will have a false sense कि मैंने इंडिकेटर देके टर्न कर रहे हैं, बट वो आपका होगा नहीं एक्चुअली. The person behind you will not understand कि आप राइट जाना चाहते हो या लेफ्ट जाना चाहते हो. सो हैज़ार्ड्स आप अवॉइड कीजिए. आपके टेल लाइट्स विजिबल रहते हैं. ये सज्जन जैसे अपने टेल लाइट्स ऑन नहीं किए, अपने हैज़ार्ड्स ऑन किए, इसका उल्टा करना चाहिए. आपको टेल लाइट्स ऑन करके रखना चाहिए. आप क्लियरली विजिबल हो. इट इज़ torrential downpour that's happening. I can see the cars very well. So there is no requirement for the hazard lights to be on. बहुत सारे गाड़ियों में आजकल टेल लाइट्स LED आते हैं और दोज LED टेल लाइट्स आर वेरी हाईली विजिबल. बहुत दूर से दिखता है. सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट अगर आप अपने टेल लाइट्स ऑन करके रखे हैं, देन यू कैन बी क्लियरली नोटिस्ड बाय द कार कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. आप देख सकते हो ये बस ने ना टेल लाइट ऑन किया है ना हैज़ार्ड लाइट ऑन किया है. दैट फेलो इज स्टिल विजिबल टू मी. हालांकि इज राइडिंग ऑन बोथ लेन्स विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट विजिबिलिटी रहता है. You can stay assured that nothing will happen if you don't switch on your hazard lights. रोड ट्रिप में ऑलवेज इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम आपका मील लेते रहिए. हाँ, अवॉइड हैविंग, if you are driving, avoid having food that is highly rich in sugar, because whilst the sugar will give you some amount of spike and some energy, but the body will end up using a lot of its resources to process out the sugar, जिसके कारण से आपको बाद में थकान हो सकता है and you might feel sleepy. So avoid starchy and sugary food. It's good to have salad, good to have a lot of protein and limited carbohydrate. But time to time खाना खाते रहिए. Have your tea and etc. so that you are all set on your road trip. So why do we love road trips? देखिए, आज कुछ भी प्लान नहीं था, संडे है, but we took out our car and we left and then suddenly we reached Highway Mirchi for our lunch. तो ऐसे ही you can keep changing your plans if you are traveling in your own car. जहाँ पे आप जाओगे you are basically touching on the destinations. मतलब दिल्ली टू भोपाल अगर आप जाओगे, कोलकाता टू दिल्ली अगर आप जाओगे, तो you can see the major cities only. But if you are going in your own car, you can drop into a lot of small destinations on the way and check out those places and explore the places and also talk to the locals there. जैसे आप हमारे रोड ट्रिप टू कान्हा वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग रास्ते में बहुत ही सारे लोकल क्विजीन्स ट्राई करते हैं और बहुत सारे जगहों में भी जाते हैं. सो लाइक दैट you have a lot of flexibility if you are traveling in your own car. Point number 2, best part is you can carry as much luggage as you want. So if you are traveling in a flight or going by train, क्या होगा, आपको लगेज कैरी करना पड़ेगा, फिर गाड़ी से या टैक्सी से निकालना पड़ेगा, फिर टेक अ कूली और टेक समबडीज हेल्प एंड अगेन रीलोड द लगेज. ये प्रॉब्लम आपके खुद के गाड़ी में नहीं होगा क्योंकि यू कैन ईजिली पैक एज मच लगेज एज यू वांट
and load it in your car and then take it out directly on the destination you reach. So hassle free travel. Point number 3, traveling by own car is cost effective. हम लोगों को अगर यहाँ से कोलकाता से शिलीगुड़ी जाना पड़ता तो तीनों का टिकट हम लोगों को लगता 9,000 रुपीज़. वहाँ से शिलीगुड़ी से गाड़ी लेना पड़ता एंड देन लोकल साइट सीइंग इन दार्जिलिंग. So the entire trip we did it from Kolkata to Darjeeling and back, and we spent 9,000 rupees on our diesel. Cost effective, isn't it? Point number 4, time management. So when we travel, we also work, and there are days when we get late while sleeping and we are tired. So ऐसा नहीं है कि सुबह उठो फिर you have a target to take your flight or you have a target to take your train. And if you are traveling in your own car, what happens? We can leave according to our own time and flexibility, and that's the best part about taking your car on a road trip. Right, so this is the MID in our car. You can see 48,750 kilometers almost. 16 kilometer per liter. Decent. I'm a spirited driver, so it's giving 16 kilometer per liter. And right now on the bottom right you can see 681 kilometer range I have with the fuel. You can see the fuel indicator. So important है, you should have these 4 meters, very essential. One is your rev counter, then is your temperature gauge, then is your fuel gauge, and then is your speedometer. Now if I just change the MID view, go to information, tire pressure. See, I am at 30, 31, 31, 29. So I have driven a bit to come here. ये बारिश हुआ है तो एकदम ठंडे टायर्स है मेरे अभी. जैसे मैं स्टार्ट करूँगा ड्राइव करना ये थोड़े वार्म अप हो जाएंगे. सो इट विल बी बिटवीन 31 to 33 on my highway drive. So this is how I keep my tires healthy, and this is something that you can also follow. ये आप देख सकते हो मेरा रियर कैमरा विद गाइडलाइंस, which means like if I turn the steering, you can see that white line changing. ठीक है? If I turn left, again you can see. So it will show you that where your car is going. So if you have an inbuilt camera, it's good. If you don't have an inbuilt camera, please get a rear camera installed with guidelines. These guiding lines are very helpful to show where your car is going to go. Most important thing is your tire. तो टायर को लेके आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे. ऐसा है कि you will have to take things with a pinch of salt. So the first and foremost thing that people tell you is that अगर आपका टायर 40,000 से 50,000 किलोमीटर चल चुका है, then you must get it replaced. So ऐसा कोई thumb rule नहीं है. What is the rule? Is your coin test. So जैसे आप देखेंगे, I'll ask the camera to be brought here. यहाँ पे एक wedge है, right here. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे अगर मैं कॉइन ऐसे रखता हूँ तो इतना दिखता है, अगर वेज के ऊपर रखता हूँ तो इतना दिख रहा है. तो ऐसा नहीं है कि the entire bottom of the tire is visible. There is to an extent still some bit of coin that is getting hidden. So जब तक आपका वो टायर का वो coin portion is getting hidden with that wedge, your tires are still good. हमारा गाड़ी 48,000 plus किलोमीटर चल चुका है. There is still tread left for safe driving for another 5 to 10,000 kilometers. जैसे वो हो जाता है, we will be getting our tires changed. Now, this is stock tire that had come with our car, okay? And this is Goodyear, which is a middle-level brand. तो ऐसा है कि कुछ brands will perform better than the others. जैसे कि अगर आपके पास कोई हाई एंड कार है एंड यू आर गेटिंग कॉन्टिनेंटल और मिशेलिन और पिरेली, उनके लाइफ लॉन्गर होते हैं. सो कौन सा ब्रांड का टायर है वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है. सेकेंड इज़ हाउ यू आर ड्राइविंग. इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन रोड्स दैट आर ब्रोकन, देन योर टायर्स विल वेयर आउट सूनर. अगर यू आर ड्राइविंग ऑन फ्लैट हाईवेज, देन द टायर्स विल लास्ट लॉन्ग. इफ़ यू आर ड्राइविंग विथ लॉट ऑफ rapid acceleration and immediate braking, your tires will wear out fast.
Also, a very important thing that people ignore and people have misconceptions about is your air tire pressure. So there is a range to which you should get your air tire pressure filled. जैसे मेरे गाड़ी के लिए 30 to 35. ना बहुत लोग क्या करते हैं कि 35 डाल लेते हैं. 35 डाल लेके आप हाईवे पे चलाएंगे तो योर टायर विल गेट हीटेड अप. उससे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. So once that pressure gets increased, you will definitely get very good mileage, but your ability to control the car and also your braking ability reduces. So it is always advisable, best thing है कि आप 30-35 रेंज है तो 30 भरवा के चलो. When the tire heats up, it will automatically go to 33-34, which is still within the range and will give you absolute control over your car. Also your longevity, because the tire is not swollen, your longevity of the tread will be longer. So ये ज़रूर इंश्योर कीजिए. Tires are very important for overall functioning of the car and stability and handling and your safety. So tires are very important. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है योर हेडलाइट्स. सो अगर आप रोड ट्रिप पे जाना चाहते हो, इफ़ यू डोंट हैव अ कार राइट, और यू हैव अ स्मॉल हैचबैक एंड यू वांट टू अपग्रेड, go for a car that has double barrel headlights. So एक होता है आपके सिटी ड्राइविंग के लिए और एक होता है आपका हाई बीम के लिए. Now why I am saying so? सिंगल बैरल में क्या होता है कि that same setup has to perform at both the areas. Now in highways, when you are driving in the night in dark and with the speeds that are permissible in these days, आप ड्राइव करोगे 80 to 120 के बीच. A single barrel setup is not adequate. So if you are planning to buy a car, go for a car that has a double barrel setup. Also important are your DRL. So यहाँ पे एक छोटा सा DRL आप दिख रहा है आपको. This is important, like if you are driving in fog or in cloudy condition and it is dark or it is dusk, the DRL helps the cars that are coming from front, also the cars that are ahead of you and are looking at you on their rear view mirror, to spot you much more effectively, especially if you are having a dark colored car. Third and most important is your fog lamps. आप गाड़ी अगर खरीदोगे रोड ट्रिप के लिए तो आप डेफिनेटली हिल्स पर ट्रैवल करोगे, नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल करोगे जहाँ पे बहुत फॉग होता है. सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ कार दैट कम्स विथ फॉग लैम्प्स डिफ़ॉल्ट, गेट अ कार दैट हैज़ ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन है आपको बाद में फॉग लैम्प अटैच करने का. मार्केट में थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे ब्रांड्स अभी भी आपको विदाउट फॉग लैम्प, विदाउट द प्रोविजन फॉर अ फॉग लैम्प गाड़ियाँ बेच रहे हैं. व्हेन यू गो टू द सर्विस सेंटर, दे ऑल्सो डिक्लाइन दैट दे कैनॉट फिट अ फॉग लैम्प इन योर कार. आपको बाहर से करवाना पड़ता है एंड दैट इज़ नॉट रियली रिकमेंडेड. सो डबल बैरल हेडलाइट्स, DRL and fog lamp is very important. Okay. इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो फॉर गोइंग ऑन रोड ट्रिप, गो फॉर अ लाइट कलर कार. बी इट वाइट, बी इट क्रीम, बी इट सिल्वर, बी इट स्काई ब्लू, एनीथिंग दैट इज लाइट कलर. व्हाई आई विल टेल यू. आप शायद अभी तक ध्यान नहीं दिए हो, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, गो ऑन द हाईवेज इन द नाइट एंड ड्राइव. If you are following a dark colored car, you will only get to see the tail lamps and the brake lights. You will not be able to detect these edges when you are driving in the dark, in night on a highway. So that time it is very important that if your car is a light colored car, the others driving either from front or from behind are able to understand the edges. So मेरे देखिए आप tail light का edge यहाँ ख़त्म होता है, but side view mirror is not in the same line. It's much extended, at least 12 inches extended outside. So my car actually ends out here. If I have a dark colored outside rear view mirror, आपको वो दिखेगा नहीं. That is why it is recommended you have a light colored car so that others are able to easily spot the edges of your car and they are able to negotiate accordingly without kind of hitting you in a highway at a high speed. So very important. Okay, with that we move to the next point. Next point is your additional stepney tire. बहुत सारे गाड़ियों में stepneys are not full size.
रिकमेंडेशन इज कि आप अगर गाड़ी ले रहे हो तो बाई अ कार दैट हैज़ अ फुल साइड स्टेपनी। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं जब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो एंड यू हैव टू चेंज अ टायर। इफ़ यू चेंज अ टायर एंड द टायर इज़ नॉट फुल साइज देन यू विल हैव टू ड्राइव एट अ रिड्यूस स्पीड। सो अवॉइड कीजिएगा बाइंग अ कार दैट डज नॉट हैव अ फुल साइज स्टेपनी। Next important thing is, if you are driving on highways, is getting a TPMS. Some cars like this have an inbuilt TPMS. There are also a lot of products that are available where you can install TPMS. Some TPMSs get installed on the air intake nozzle. However, if you are able to get one that gets installed inside the rim. So inside the rim out here my TPMS is installed and it will give you readings constantly. Also, if it pressure goes down below a certain range, it will start sounding an alarm in your car. Very important if you are driving on a highway. And most important in terms of tire health. So a lot of people will tell you carry tire inflators or carry other substances that are required for getting your tire changed. But to be honest, if you see this tire, can you bring the camera closer? Just point out here. So you can see these perforations still sticking out. Even after 50,000 kilometers, I have never used the stepney. You can look at the tread. The tread also will show you that this stepney has never been used. So क्या है आजकल के जो radial tires है, in those radial tires, these days, if there is a puncture, if there is a nail that goes in, tire pressure goes down very, very, very slow. So you will have adequate distances to travel to find a place to get your tire repaired, and which is what I have done with my tire. So a tire pressure inflator, I don't think that is that much important. जहाँ पे आपकी गाड़ी अगर if it is traveling at 33 psi, by the time you reach a tire repair shop, it will only go down to 31 psi. So I don't see there is a need for you to have a tire pressure inflator, but getting a TPMS is very important. At times what happens is that your tire might get punctured and the nail might go out. At that time your tire starts losing out air much faster than the other. So the TPMS will warn you that you need to stop and get your tire replaced. एक और important point है क्या फ्यूल क्या डालते हो गाड़ी में. So जैसे हमारा BS6 डीजल कार है, we always try and ensure कि हम इंडियन ऑयल पंप से एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल डाल रहे हैं. It's a premium diesel. We are not promoting any brand as such, but given the premium quality of the diesel, the performance with BS6 engine and BS6 exhaust system, we have observed that it is very good with that diesel. तो कोशिश कीजिएगा, always try and fill good quality fuel into your car. It will give you a better result in terms of engine performance, in terms of mileage, in terms of how limited the service cost in future dates go up to be. तो हम लोग गाड़ी में क्या क्या रखते हैं जब हम लोग एक लंबी सी लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं. फर्स्ट थिंग इज आई टेक केयर दैट आरव हैज हिज नेक पिलो, क्योंकि ये कभी कभी 13 to 14 आवर्स एट अ स्ट्रेच गाड़ी में बैठ के चला जाता है एंड ही नीड्स अ नेक पिलो एंड अ शीट टू कवर हिमसेल्फ इफ ही वांट्स टू रेस्ट. सो हियर वी कैरी एम्पल वाटर बिकॉज वी travel through a lot of remote destinations, and we make sure that we carry protein bars and dry food because there might be places we don't get any restaurant or any place to eat, so we stop our car, fill ourselves and then go. अगला पॉइंट है गूगल मैप्स. तो अभी नेटवर्क अवेलेबिलिटी बहुत ही इम्प्रूव कर चुका है, so wherever we go we get Google Maps. And if not, suppose we are traveling to a very remote location, we make sure we download the map. नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग देखे होंगे कि मैं और आरव हमेशा पीछे की सीट में बैठते हैं. क्यों? क्योंकि गाड़ी में है एयर बैग्स एंड इट्स नॉट सेफ टू पुट अ किड ऑन द फ्रंट सीट. वीडियो करते करते टी टाइम हो गया. रेन्स एंड मसाला चाय आर जस्ट परफेक्ट टुगेदर. तो हम लोग एक गर्मा गर्म चाय पी के कोलकाता की तरफ निकल पड़े. Here we go. You can take me there.
अभी 10 मिनट ड्राइव कर लिए हैं. आइए देखते हैं टायर प्रेशर क्या हुआ है. So front two tires are showing 32, rear two are showing 31. Always front two get heated up ahead of the rear two, क्योंकि फ्रंट के ऊपर आपका इंजन रहता है और डीजल इंजन थोड़ा हैवी होता है. तो यही है, अगर आप 30 लेके चलोगे तो एज यू गो दिस इज गोना गो अप टू लेट्स से 33, 34. बट आज रोड वेट है तो शायद से 32, 33 रहेगा. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. देखिए अभी हम लोग 70 पे क्रूज कर रहे हैं एट 1750 RPM और आपको इंस्टेंटेनियस माइलेज दिख रहा होगा. राइट, इट इज़ समवेयर अराउंड 30 किलोमीटर्स गोइंग अप एंड डाउन लिटिल बिट डिपेंडिंग ऑन हाउ द रोड्स आर. सो हाईवे पे अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं तो इट ऑलवेज हेल्प्स इन सेविंग द माइलेज. And most importantly, when you are going on a long road trip, make sure that you sleep well, your child sleeps well, eat well, never keep your stomach empty, and drive stress free. So I hope you have liked our travel tips. If we have missed anything, or if you would like to add anything to the travel tips, please feel free to add it in the comment box below. And don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you very soon. Take care.